In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Assalamu alaikum. I am Maryam Idris. I am IELTS and language instructor in the Skylark Institute of English Language in Ukhara campus. So welcome back again with another video, and today the video is all about interview skills. जी हाँ, interview skills में हमें क्या चाहिए और हम किस तरीके से उसको बेहतर कर सकते हैं, वो कौन से ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनकी हम पहले से ही तैयारी कर सकते हैं, और इसके अलावा हमें जवाब कैसे देने चाहिए अपने इंटरव्यू में. तो लेट्स टेक अ लुक टुडे दैट particularly if we talk about the importance of interview skills, so it is to be considered the most important part of the learning skill. So let's take a look that what are the important points to be overview while preparing for your interview. तो सबसे पहली चीज़ है how to prepare yourself. अपने आप को तैयार करना, mentally and physically fit, as well as are you ready for the interview? Do you have the complete knowledge about your career that you're going to start? The next thing is your appearance. आपकी जो ज़ाहिरी शख्सियत है वो बहुत मैटर करती है. कपड़े का पहनना, आपके रंगों का चुनाव, आपके हाथ में किसी भी किस्म की एक्सेसरी लाइक वॉचेस, they play a very vital role in your appearance, especially in the interview. Then the thing which comes in interview skill is the organization info. यानी जिस भी किसी फर्म में जा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में टीचिंग के लिए, किसी भी जॉब के लिए, तो आपको उस इन्फो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. उसके बाद देन डेफिनेटली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द अनएक्सपेक्टेड. कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी सवाल कर सकता है, तो उसके लिए आपको अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार करना होगा. लेट्स चेक व्हाट्स इम्पोर्टेंट इन इंटरव्यू. द फर्स्ट थिंग मस्ट बी कॉन्फिडेंट. आपको कॉन्फिडेंट नजर आना चाहिए. आपके काइनेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, but there are not all the kinesics, not all your body language is required, but your eye contact and your sitting posture should be according to the examiner or the interviewer demand. उससे ये लगे कि आप जिस तरह बैठे हुए आप confident हैं and you are ready for the questions, and the interviewer may get positive vibes from you that yes, this person is very confident. Your posture should be very erect and it shows that you are relaxed on the chair on which you are sitting. टांग पे टांग रख के नहीं बैठना, बिल्कुल straight, and you can see the hands how you can don't make fist तो नहीं बनानी, दोनों हाथों को भी नहीं जोड़ना. यानी कोशिश ये करें कि बिल्कुल it should be a very calm and poised and relaxed posture. Then you must have an eye contact with an interviewer. आपने कमरे का जायजा नहीं लेना या बोलते हुए दीवार की तरफ भी नहीं देखना. आपने मुकम्मल आई टू आई कांटेक्ट रखना है अपने इंटरव्यूअर के साथ, एंड दिस आल्सो शोर दैट हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. नाउ लेट्स टेक अ लुक द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हिच कैन कम in the interviews, or which is to be considered the common questions that can be asked in all interviews around the world. So these questions are in front of our screen. As you can see, what is your greatest strength? आपकी strength पूछी जा रही है कि आपकी strength यानी खूबी क्या है. Normally लोग define their relationships or some other thing like family. They have a family, this is their support, or they talk about some other thing. लेकिन यहाँ पर basically these questions are related to you, your ability, and they judge also your mental fitness. Means, what is your greatest strength? You can also say that my greatest strength is my decision making.
and I make decisions, good decisions. I take decisions. When I take decisions, I just stick by to it and I complete it till the end. What is your greatest weakness? Again, this question is very, very important. A weakness आपने बता के छोड़ नहीं देनी, like you are an angry person or you impatient or you are loose tempered. You have to like controlled your answer in a controlled way. You have to give the answer. What is your greatest weakness? If I talk about my weakness, it is impatience. But couple of years I have worked on it and I've reduced it. जब आप ये बात कर रहे होते हैं तो the examiner will get that if this person can work on his weaknesses, definitely he will going to see the flaws around him and he is going to start correcting them as well. So you can also be the best option for the interviewer to select you. How you come to know about us, any organization, any institute? आपके पास थोड़ी सी information होनी चाहिए, थोड़ा सा research work करके जाएं, थोड़ी सी resources आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से, मतलब advertisement से पता चला, TV से पता चला, or any resource person has told you about this particular organization and you just showed up there. What difference you will bring in this organization? This is again a question that is again pointing out that are you able, or what are your abilities that we are distinguished and unique and that we should hire you. So there is a chance to tell them what difference you will become or you will bring in that particular organization. If it is a teaching, for instance, we take an example of a teaching institute. आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं, आपने टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं, तो इन केस दे विल आस्क यू what you think that you will going to bring the difference in this institute. So you will say that I have unique and modern methodologies of teaching and I want to apply them and I want to create difference with my teaching methodologies. Apart from that, I'm a creative person, I love innovation, and this thing definitely going to bring the difference in this particular institute. And this thing definitely is going to be, again, the positive image is going to create, and it's going to impress the interviewer that you are the right candidate. Okay, so every answer should be calculated, और बहुत calculated आपने answer देने ताकि उसको ये पता चले कि he knows and he's attentive towards me, and that's why he's giving the answers in a very right and accurate way. Next questions. Why you want to join this organization? Now the question is why. Mostly people start the question of why with because. आपने because से कभी भी answer को start नहीं करते. Why? Because normally जो अगर WHY का answer हो question होता है, उसका answer अगर आप because से start करते हैं, it is considered to be an incomplete answer. और उसके अलावा because को कम से कम यूज करें, और अगर आपने यूज भी करना है in the middle, then we have lot of options. You can say other than, because, you can say due to, you can say owing to, for, since, on account of, and there are number of options that has been popped up on the screen and you can use them as well. So why you want to join this organization? So, well, you can start your answer, well, generally, honestly speaking, I want to join this organization owing to, due to, as. So you have to tell them that I have come to know that it's a flourishing platform, it's a best company, it's a best organization, it is the organization that is working on the constructive plans. For that reason, I have come over here. So you have to tell in the positive way. What irritates you about your co-workers? Now, lots of people start giving answer very direct and abrupt answer, and sometimes it give a negative gesture. यानी फौरन से कोई ऐसी इरिटेटिंग सी बात, यानी कि अगर उनके को-वर्कर्स में वो फौरन से बता देते हैं. कोशिश करें कि वो आप शुगर कोटेड या उसको पॉजिटिव अंदाज से डिफाइन करें, ना कि उसको आप क्लियरली डिफाइन कि मैं तो इस चीज से इरिटेट होता हूँ, क्लियरली, ब्लंटली, विच इज नॉट
Good. Where do you see yourself after 5 years? Definitely everybody has a dream because you went to the job, you want a job because you want to see yourself at some very good place. अपने आप को किसी अच्छी मुकाम पर देखना चाहते हैं, किसी अच्छी जगह पर देखना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली ये भी आपसे सवाल कर सकते हैं कि क्यों, कहाँ और क्या देखना चाहते हैं. तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा नो हाउ होना चाहिए. इंटरव्यू के लिए हमेशा से ये ज़रूरी है कि आप इन तमाम सवालों की एक तो तैयारी करने के बाद फिर एक ऐसे रिसोर्स पर्सन के साथ भी इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें जो कि आपके कुछ फ्लॉज को देख सके कि आप आया जवाब जो है वो दुरुस्त दे रहे हैं कि नहीं. बाज़ औक़ात हमें लग रहा होता है कि हम दुरुस्त जवाब दे रहे हैं और यकीनन ये हमारी नौकरी पक्की है, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि हमें नहीं मिला और नहीं मिली उसकी वजह कुछ भी हो सकती है. हो सकता है आपके जवाब सही ना हो या उसके आपके जवाबात ने उसको उस तरीके से इम्प्रेस ना किया हो या आपके जवाबात में कुछ ऐसे फ्लॉज थे जो इंटरव्यूअर को नजर आए. तो वो रिसोर्स पर्सन के साथ जब आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उससे ये होता है कि आप इजीली उसको अपने इंटरव्यू को अच्छे से कर सकते हैं. That's all from my side. Inshallah, you have to wait for the next video for the next topic. For the further details, you can contact our Google Classroom for the practice material, and you can also contact us on our WhatsApp number. You can also subscribe our channel, YouTube channel. You can also like our Facebook page, and that's all from my side. Allah Hafiz.